back to the another video, and in this video I'll be taking you through my journey for the first time when I visit. Like this video, subscribe to my channel and hit the like button, and stay tuned till the upcoming video. Good morning everybody, welcome back to the another video, and in this video I'll be taking you through my journey for the first time when I visited to the ONGC offshore area. Right, what was my expectation and what sort of the thing I dreamed before going to the ONGC offshore area, and what are the sort of the thing which comes out in the actual scenario. Right, because many of the people were asking and were talking about to make a video on the ONGC offshore journey. Right, at the same point of time, many of the people were discussing that what sort of the work a engineer do at the offshore area. So in this video I'll be also talking about the sort of the work that will be done by the mechanical engineer and the electrical engineer, instrumentation engineer and the electronics engineer. Right, so before starting this video, if you haven't watched my first video regarding the ONGC offshore life, in which I discussed that why did I resign from ONGC, so just go and watch that video and come back to this video again. Right, and if you haven't subscribed to my channel, please subscribe and hit the like button. Right, now let's start this video. I'll be sharing some of the pictures that I clicked during my journey. Right, so the thing is that when we get selected for any of the PSU, whether it is NTPC, IOCL or the ONGC, we always look forward for the company or for the PSU as a whole. We don't care whether we are getting selected into the offshore area, whether we are getting selected into the drilling services or mechanical service production, or the material management officer. We don't care about that. We just need a PSU, right? And the same thing happened with me, and same thing happened with number of the candidates, that the moment we are preparing, we are always looking forward for a PSU, a prestigious PSU, right? So there is nothing wrong with that, but the real story starts the moment you get selected and you are posted a particular area. राइट, सो अभी हम बात करने वाले हैं सिर्फ ONGC के बारे में और ONGC ऑफशोर के बारे में. सो आप जब भी आप सेलेक्ट होते हैं, उसके बाद द मोमेंट यू गो फॉर द ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज, यू विल बी गिवन द पोस्टिंग. राइट, it's very rare that they will give the posting according to your choice. The most in the cases they are given according to their requirement. राइट, सो आपका पोस्टिंग वो लोग दे देंगे, एंड यू विल गेट टू नो वेदर यू आर पोस्टेड इन द ऑफशोर एरिया और द ऑनशोर एरिया. अगर ऑफशोर में भी पोस्टेड हुए हो तो पता लग जाएगा कि अगर रिग में पोस्टेड हुए या प्लेटफॉर्म में पोस्टेड हुए या कहाँ पर पोस्टेड हुए. ठीक है, सो here you are very clear that you have posted to the offshore area or the onshore area or any of the office work or something like that. Right, so if you get posted into the offshore area, उसके लिए you have to go through the number of the training before going to the offshore area in actual scenario. The one training used to held in the Mumbai itself, which is called HUET training. Another one used to held in the Goa. Right, so basically what happens in the HUET training, HUET is basically stand for the helicopter underwater escape training. Right, so in this training they will be telling you that how to escape the moment the helicopter sink into the sea water, unfortunately. Right, because there have been some of the cases that the helicopter goes sink inside the water with number of the people sitting inside it. So this is basically just a formality to let you people know that you were given the training before going to the offshore area. So अब इस ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये ट्रेनिंग कोई नॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है. इसमें बहुत ही रिस्क है और लगता भी है. इफ़ यू आर न्यू कमर और यू आर वेरी न्यू टू द स्विमिंग, इफ़ यू डोंट नो स्विमिंग, इफ़ यू हैव वाटर फोबिया, तो ये ट्रेनिंग अपने आप में एक चैलेंज है. राइट, सो व्हाट हैपन्स इज दैट उसमें 4 स्टेजेस रहेगा. एक डमी हेलीकॉप्टर रहता है और एक स्विमिंग पूल रहता है, एंड डमी हेलीकॉप्टर इज होल्डेड बाय द ओवरहेड क्रेन. राइट, दैट क्रेन विल बी सिंकिंग दैट डमी हेलीकॉप्टर इनसाइड द पूल. राइट, एंड यू विल बी सिटिंग इन दैट हेलीकॉप्टर. राइट, सो पहली स्टेज में क्या होता है कि आपको जो डमी हेलीकॉप्टर है उसके अंदर बैठा दिया जाएगा और हेलीकॉप्टर को सिंक किया जाएगा पूल के अंदर, एंड यू हैव टू कम आउट फ्रॉम द विंडो. राइट, विंडो में कोई भी ग्लास नहीं रहता, आपके
कोई भी बेल्ट आपको नहीं बांधा जाएगा पहली स्टेज में। सो फर्स्ट स्टेज इज वेरी सिंपल एंड एवरीबडी कैन डू दैट प्रोवाइडेड यू हैव टू स्टे 1 मिनट इनसाइड द वाटर, राइट। सो वो कर लेते हैं क्योंकि आपके पास सिलेंडर और मास्क लगा रहता है, तो यू कैन इजीली स्टे 1 मिनट आउट देयर एंड यू कैन कम आउट थ्रू द विंडो एंड रीच टू द पूल साइड, राइट। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, यू विल बी टाइड अप बाई ए बेल्ट, आपके बेल्ट एक बांध दिया जाएगा एंड यू नीड टू फर्स्ट अनबकल दैट बेल्ट एंड यू नीड टू कम आउट थ्रू द विंडो एंड रीच द पूल साइड। दिस इज द सेकेंड स्टेप। और एक स्टेज एडवांस है ये, बट वी कैन डू दैट। द रियल एक्शन स्टार्ट फ्रॉम द थर्ड स्टेज। टोटल 4 स्टेज हैं, तो थर्ड स्टेज में क्या होता है कि what they will do is basically they will close the window by a glass and the glass will be bounded up by a rubber padding, right. So the moment helicopter goes inside the water and you need to stay 1 minute out there in the third stage, and after that you need to peel off that rubber and you need to break the glass through the window and you need to come out through the window and you have to reach the pool side. So it takes more time because first you need to peel out that rubber and then you need to break the glass and you need to come out through the window. So इसमें थोड़ा स्कैरी हो जाता है, बट द चौथा स्टेज जो है वो बहुत ज़्यादा स्कैरी हो जाता है। जब the moment when I was doing this I feel very scary and there was a moment when I refused to do that, but somehow this is basically the protocol and you need to complete the training in order to get the certificate, तो वो करना पड़ा था। तो चौथी स्टेज में क्या होता है, आपको बेल्ट लगा दिया जाएगा और विंडो भी क्लोज रहेगा, ठीक है। तो द मोमेंट हेलीकॉप्टर सिंक इन यू हैव टू फर्स्ट अनबकल योर बेल्ट एंड यू हैव टू peel off the rubber and you need to break the glass and you have to come out through the window to the pool side। तो बहुत ज़्यादा स्कैरी हो जाता है बिकॉज पूल भी काफ़ी गहरा रहता है और उसमें समहाउ आपका मास्क अगर काम नहीं कर रहा है, आपका सिलेंडर ऑपरेट नहीं कर पाए आप, तो उसमें एक ब्रीथिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। सो दिस वाज द ट्रेनिंग एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस ट्रेनिंग यू विल बी गोइंग टू द ऑफशोर एरिया, राइट। अब बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि ऑफशोर कैसे जाते हैं, शिप से जाते हैं, हेलीकॉप्टर से जाते हैं, मरीन से कैसे जाते हैं, लाइक मैनी ऑफ द पीपल हैव दिस कन्फ्यूजन। तो आप हेलीकॉप्टर के थ्रू ही आप शिप पे जाएंगे या रिग पे जाएंगे, ठीक है। जो खाना वगैरह रहता है या जो असेंशियल सर्विस रहती है वो शिप के थ्रू जाती हैं, बट द मैन पावर यूज टू ट्रांसपोर्टेड थ्रू द हेलीकॉप्टर ओनली, राइट। एंड द सिनेरियो इज सेम एज वी ट्रेवल इन द फ्लाइट। आपको जाना है, आपका पेमेंट होगा, आपका जो वेट है वो एक लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपका जो एक्चुअली में जो आपका लगेज है उसका वेट एक लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और दोनों का कंबाइंड वेट एक लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए बेसिकली। और आपका मोबाइल वहीं पे जमा कर लिया जाएगा। सो एज यू कैन सी इन द पिक्चर दिस इज़ बेसिकली द heli base। The ONGC people call it heli base and it is situated in the Mumbai। तो हेलीकॉप्टर वगैरह यहाँ से ही टेक ऑफ करते हैं और एक हेलीकॉप्टर में 12 से 15 लोग जा सकते हैं और 2 उसमें अपना केबिन क्रू और यू कैन से द पायलट रहते हैं, ठीक है। तो टोटल 15 से 17 लोग उसमें ट्रैवल करते हैं। एंड इफ़ यू टॉक माई ऑन जर्नी I was posted to the Sagar Shakti rig which is situated 150 kilometer approximately away from the ONGC beach, right, or you can say this heli base, and it will take around 45 minutes to travel. So in the meantime, in the 45 minutes you will be there in the helicopter, right. You can see in the pictures you will be there in the helicopters and it will take 45 to 50 minutes to reach to the rig, राइट। नाउ अब हेलीकॉप्टर लैंड होगा एक रिग पे, राइट, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आपको जाना है और उस रिग पे एक हेली बेस रहेगा विच विल बी अटैच टू दैट रिग ओनली। तो आप वहाँ पे टेक ऑफ करेंगे, आप वहाँ से रिग पे जाएंगे एंड द अदर बैच जिनको जाना है 14 दिन के बाद वो उस हेलीकॉप्टर में बैठ के सीधे ONGC हेली बेस पे आ जाएंगे, ठीक है। तो इस वर्क लाइक दैट कि एक बार हेलीकॉप्टर जाता है तो आपको रिलीव करके जाता है और दूसरों को लेके आता है वो 14 दिन के बाद, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स एंड मूविंग टू द सेकेंड स्टेज दैट मैनी ऑफ द पीपल वर कमेंटिंग दैट व्हाट सॉर्ट ऑफ द वर्क ए इंजीनियर डू एट द ONGC ऑफशोर एरिया, राइट। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट फ्रॉम द मैकेनिकल इंजीनियर। सो बेसिकली अगर आप ONGC में सेलेक्ट होते हो थ्रू ए मैकेनिकल ब्रांच तो आपको या तो मैकेनिकल मिलता है या ड्रिलिंग मिलता है या आपको एक प्रोडक्शन करके मिलता है,
ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर आप जाते हो मैकेनिकल में, तो आपको मैकेनिकल मेंटेनेंस का काम उधर देखना पड़ेगा। कोई भी बहुत ज़्यादा बड़ी मशीनरी रहती है उधर, पाइप्स रहते हैं, क्रेन रहती है, पंप रहते हैं, मोटर्स रहती है, a number of the thing are there, you have to do the maintenance of each and everything right there। ठीक है। कोई ब्रेक डाउन आता है तो मैकेनिकल की टीम को उसको हैंडल करना रहता है। ठीक है। दूसरा है ड्रिलिंग सर्विस। जो ड्रिलिंग में जाते हैं उनको जो अपना पाइप को ड्रिल करना रहता है अंदर डाउन द सी, तो उसमें वो लोग इन्वॉल्व रहते हैं, उनका सबसे ज़्यादा फिजिकल वर्क रहता है। तो ड्रिलिंग सर्विस अगर आप भर रहे हैं तो बहुत ही you have to keep this mind that you may be subjected to the hardcore physical work at the rig, right? So जो प्रेफरेंस होना चाहिए बेसिकली अकॉर्डिंग टू मी, आप पहले मटेरियल मैनेजमेंट ऑफिसर, देन प्रोडक्शन, देन मैकेनिकल, और सबसे लास्ट में आप ड्रिलिंग को रख सकते हैं। ठीक है। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का काम रहता है बेसिकली मोटर है गया आपका, कंट्रोल पैनल है वहाँ पे, और जनरेटर है, कंप्रेसर है। तो इस सब में अगर कोई ब्रेकडाउन आता है, इस सब को स्टार्ट करना है, पॉज करना है, तो इस सब का पूरा कार्यक्रम आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के थ्रू देखा जाएगा। जो भी इलेक्ट्रिसिटी से इंक्लूड है, आपका पैनल हो गया, आपका सर्किट हो गया, कोई भी न्यू कनेक्शन देना है या इंजन बंद करना है, तो मैकेनिकल वाला अपना अलग से काम करता है, इलेक्ट्रिकल वाला अपना अलग से काम करता है, तब जाके वो बड़ा वाला इंजन एक वहाँ पे बंद हो पाता है। ठीक है। सो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस कंट्रोल पैनल, जनरेटर, कंप्रेसर, circuits and all that। Now talking about the electronics engineer and the instrument engineer। So अब वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर का काम बेसिकली जो हेलीकॉप्टर का रडार सिस्टम रहता है, एंटीना रहता है, वेदर फोरकास्टिंग यूनिट रहता है, टेलीफोन्स रहते हैं, तो उनके कम्युनिकेशन को मेंटेन करने का काम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और द इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर्स का होता है। बहुत सारे कैमराज रहते हैं, उनको सिंक्रोनाइज करने के लिए इनका काम होता है। पैनल हो गया आपका, कंप्यूटर हो गया या कॉमन ड्राइव हो गया, तो इन सब के काम के लिए आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर वहाँ पे रहते हैं। ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द ओवरऑल सिनेरियो। बट नाउ सम पीपल विल आस्क दैट वेदर द सिविल इंजीनियर एंड वेदर द computer science engineer do get posted at the offshore area. So the chances are very very less. When I was at the offshore area, I have not witnessed any of the civil engineer or the computer science engineer out there, right? So there are the mainly four type of the engineer that you can say: the mechanical engineer and the electrical engineers, electronics engineer and the instrument engineers, and the another kind of the people like geologist or some other kind of the people will be there that you need not to वरी अबाउट। सो चार तरीके के इंजीनियर का डिसिप्लिन के लोग उधर जाते हैं। सो दिस इज हाउ ए रिग वर्क लाइक, एंड यू हैव सीन सम ऑफ द पिक्चर्स, सम ऑफ द एक्चुअल पिक्चर्स ऑल्सो। सो यू माइट बी हैविंग एन आइडिया दैट हाउ स्कैरी इट बिकम्स एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। But there are some of the advantage by going into the offshore area that I will discuss into the another video. So if you like this video, subscribe to my channel and hit the like button, and stay tuned till the upcoming video. Thank you.